Hello, friends. Welcome back to my channel Learn English Today. In today's video, we will learn some useful phrases which will help you to sound more natural and confident in English conversation. So, without wasting time, let's get started. The first one is on a shoestring, on a shoestring, meaning with a very small amount of money. मतलब बहुत कम पैसे के साथ, न्यूनतम पै धनराशि के साथ किसी काम को कम से कम पैसों से जब करना होता है तब ऑन अ शू स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: दे लिव्ड ऑन अ शू स्ट्रिंग फॉर ईयर्स बिफोर देयर कंपनी फाइनली टुक ऑफ. Next sentence: we traveled across Europe on a shoestring, staying in hostels and cooking our own meals on a shoestring. मतलब बहुत ही लिमिटेड बजट के साथ या बहुत कम पैसों के साथ कोई काम किया जाता है तब ऑन अ शू स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं. ऑन द वर्ज ऑफ. ऑन द वर्ज ऑफ मीनिंग टू बी एट द पॉइंट वेयर समथिंग इज अबाउट टू हैपन. टू बी ऑन द एज और मार्जिन और बॉर्डर मीन्स किसी चीज़ की कगार पे होना, किसी चीज़ की कुछ बिल्कुल अभी होने वाला है, उसकी एज पे होना. यानी हिंदी में अगर कहें तो किसी चीज़ के बिल्कुल एज पे, उसकी कगार पे होने को, या कुछ होने वाला है, कुछ बहुत क्लोज है या कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है तब ऑन द वर्ज ऑफ का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: द टीम इज़ ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स. Next sentence: the weather forecast shows that we are on the verge of a major storm. मतलब on the verge of means being very close to or about to experience something. It indicates that something is likely to happen soon. Next is on the spur of the moment. On the spur of the moment, meaning suddenly without any प्लानिंग, यानी अचानक एकदम से बिना सोचे बिना पहले से कोई प्लान किए हुए. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: आई मेड द डिसीजन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट बट it turned out to be one of the best choices I have ever made. Next sentence: they threw a party on the spur of the moment, inviting everyone in the neighborhood. तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब किसी चीज़ को सडनली कर देना विदाउट एनी प्लानिंग और प्रिपरेशन के. Next is on pins and needles. On pins and needles, meaning very nervous, worried, or anxious, in a state of anxiety or tense expectation. मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होना, उत्सुक होना कि कुछ होने वाला है, किसी चीज़ का वेट करने में, उसकी प्रतीक्षा करने में जब बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, तब ऑन पिन्स एंड नीडल्स का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: द ऑडियंस वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स एज द विनर वॉज अबाउट टू बी revealed. Next sentence: the whole team was on pins and needles before the big game. So, on pins and needles मतलब बहुत anxious होना, nervous होना और excited होना while waiting for something to happen. Next is on the safe side. On the safe side, meaning being especially careful in order to avoid something unpleasant or to avoid risk. मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल होना या अ, एहतियात करना, अपनी सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान में रखना. म- मतलब प्रिकॉशंस लेना या चॉइसेस करने में, किसी चीज़ को चूज़ करने में रिस्क को अवॉइड करना. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: आई पैक्ड अप ऑल माई फाइल्स जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड बिफोर अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर. Next sentence: she always carries a first aid kit to be on the safe side when she goes hiking.
So, on the safe side means taking precautions or making choices to avoid risk, ensuring that you are protected from possible danger or problems. So, in today's video, we have learned some useful phrases on a shoestring, on the verge of, on the spur of the moment, on pins and needles, and on the safe side. So that's it for today. I hope you have liked my video and you might have learned also some useful phrases. So if you like the video, please don't forget to subscribe my channel, like, share and subscribe. I will catch you in the next video. Until then, happy learning and thanks for watching.